So in the last video, we have studied the following things. Let's recap. First we have studied what is biology. Biology is the study of life and its different aspects. Who coined the term biology? In 1801, French scientist, an evolution scientist, Jean-Baptiste Lamarck coined the term biology for the first time. Now, there are fathers of different division of biology. Like we can say the father of biology is Greek philosopher Aristotle. Father of zoology is the same person, the Aristotle. Father of botany, Theophrastus, and so on. Now, next we have studied about life. What is life? Life is a form of energy, or it's a form or condition which help us to distinguish between living thing and non-living thing. Because living thing follows some life processes which are not followed by non-living things. How life came into existence. In this topic, we have studied different theories, how universe was created from a singularity through a big bang. Then after formation of universe, galaxies formed. From galaxies, different star system formed. One of the stars is sun and our solar system. How earth is formed. The ancient days in the beginning, when earth born, earth was just a spherical mass of molten rocks, molten magma. Gradually, with the time, the climatic condition of the earth became cooler. Different ice ages came, and through different evolutionary process, through different chemical changes, life came into existence. The first cells came into existence. First came some simple elemental gases, and then they chemically react with each other and form compound gases, and from compound gases form different compounds, complex compounds, from some organic compounds like DNA, RNA, nucleotides, protein, amino acids, carbohydrates, fats, etc. And DNA, RNA, they react with each other, formed protoplasm, first formed protovirus, then virus, then another stream of the first organic evolution goes towards the archaebacteria, then bacteria, and like this evolutionary process, life is formed. Then we have studied the characteristics of living being, the distinguishing features of living being from non-living being, like birth, cellular structure, unicellular or multicellular, nutrition for energy, respiration, excretion, reproduction, growth, response to signals, internal and external signals or stimulus, then death. These are the characteristics features of living beings. Then we have studied different branches of biology. So in this video, we'll start from this. In this video, we'll discuss about branches of biology, the remainings from the part 1 video. Some important discoveries in biological sciences, scientists who made the difference, for whom the subject biology is flourished nowadays, contribution of India and Indian scientists towards the biology, towards the world of biology, and why we need to study biology, how it will help us, what are the scopes of biology, how it help us to make our career, how it help us for human welfare, technology and biology, combining techniques of biology for human welfare, and some biological abbreviations and the terms. So about all these things we are going to discuss in this video.
Economic biology. Various economic aspects of biology. How the subject biology help us to earn money. Osteology, study of bones. Ornithology, study of birds. The father of Indian ornithology is Salim Ali. Entomology, study of different insects. Herpetology, study of reptiles like lizard, snakes, etc. Ethology, study of animal behavior. Parasitology, study of host parasite interactions. Marine biology, here the living world inside the oceans are studied. Biogeography, in this division of biology we study geographical distribution of different living beings. Biophysics, combination of physics and biology. For biotechnics and to develop instrument biology need some physical formulas. In this topic, in this division biophysics, we study all these things. Biochemistry, the chemical aspects of biology. Here we study metabolic pathways of cells, about molecules, how metabolism, anabolism, catabolism, the chemical reactions occurs at the cells, and all these things. Molecular biology, biotechnology. In these divisions of biology, we study about biomolecules like DNA, RNA, etc. Now we'll discuss about some branches of applied biology. Applied biology means branches of biology which are used for human welfare. First, agriculture. You all know, or you have listened about agriculture, you all know what is agriculture. The production of crops for nutrition purpose or for economic benefit. Horticulture. Here, gardening is studied. Agriculture of flowers mainly, or fruits. Forestry. Here we study about different forest, the layers of forest, the conservation aspects of forest, tourism aspects of forest, and how forest is helpful to maintain ecology and to a government of a country. All these things we study about forest in forestry subject. Pisciculture, that is culturing or rearing of fish for economic benefit, because fish is a good source of protein and fishes are cheap also in cost. Sericulture, a rearing of silkworm, silk moths. On the basis of sericulture, a silk industry is there, which are silk is used for making fabrics and cloths, which are very costly. Apiculture, a rearing of honeybees to extract bee wax, bee venom, and obviously honey, which is very nutrition rich supplement. Poultry farming, rearing birds for meat, for eggs like hen, duck, turkeys, quails, etc. Pearl culture, we know about pearl. It's a kind of mollusk from which pearl is extracted, which are used to make jewelries and also for medicinal purpose. Animal husbandry, rearing domestic animals and dairy farming. Here we study the rearing methods and economic aspects of rearing different domestic animals like cow, buffalo, pigs, horse, etc. Genetic engineering, how genetically modified organisms
are made, or how gene therapy is done. All we study in genetic engineering, how modification in genes are made artificially. Bioinformatics. There is a combo subject of computer and biology, biotechnology, technical aspect of biology, pharmaceutical. Here, study about medicines and drugs is done. Here we look some important discoveries and invention of biology. Vitamins was discovered by Hopkins and the name vitamins was given by Casimir Funk. Immunoglobulin or antigen was discovered by Landsteiner. Deoxyribonucleic acid was discovered by two scientists, Watson and Crick, though they have copied some of the data from Rosalind Franklin. Insulin was discovered by Banting and West. Polio vaccine was discovered by J. Schock and Savin. Tuberculosis bacteria was discovered by Robert Koch. BCG vaccine was introduced by Calmette and Guerin. For the first time, bacteria was observed by Anton von Leeuwenhoek. Open heart surgery was performed by, for the first time, Walter Lilley. Streptomycin, one of the antibiotics, was invented by Waxman. Stethoscope by René Linac. First antibiotic, the penicillin, was invented or discovered by Alexander Fleming when he was doing study on Staphylococcus bacteria. RNA by Watson and Arthur. Microbes of malaria by Charles Laveran. And heart transplantation was successfully done by Christian Barnard. Genetic code was discovered by Indian origin scientist Hargobind Khurana. First test tube baby by Edward and Steptoe. Blood circulation was observed by William Harvey. Vaccination done by Edward Jenner. Polio drop by Albert Sabin. Gene of cancer was discovered by Robert Weinberg. Rh factor and blood replacement was performed by Charles Landsteiner. Sex hormone discovered by Eugen Steinach. Sperm was observed for the first time by Leeuwenhoek. Sulfur drugs were discovered by Domagg. Three kingdom classifications was given the scheme one of the scheme of classification, three kingdom classification given by Ernest Haeckel. Cancer was discovered by Robert Wellberg. X-ray by William Röntgen. Amoeba by Rosel von Rosenop. Animal cloning first time done by Robert Briggs and Thomas King. Antibody against rabies was given by Louis Pasteur. Antitoxin of diphtheria by von Behring. An artificial heart by Michael Debek. Chromosomes were discovered by Hofmeister. Chloroplast by Schamper. Mitochondria by Colliker. Nucleus was discovered by Robert Brown. Nucleoplasm was discovered by Strasburger. First enzyme was discovered by Anselme Paine. Mitosis was discovered by Walter Fleming. Meiosis was discovered by Oscar Hartwig. Mutation, theory of mutation, the mutation was discovered by or observed by Thomas Morgan. The father of mutation is called Hugo de Vries. Or the theory of mutation was given by Hugo de Vries. First virus was extracted
by Dmitry Ivanovsky and Bizorink. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades. Don't let them see me down. You have taken over my days. So tonight I'm going out. Oh, I'm feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I'll only spoil the party anyway. All the girls are looking fine. You're the only one on my mind. La da dee, la da da do, la da da me, la da da you, la da. There's no way to say this song's about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades. Don't let them see me down. You have taken over my days. So tonight. अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया और इंडियन साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को क्या दिया है, कैसे अपना पहचान बना है इंडिया ने बायोलॉजी का दुनिया में. सो हियर विल स्टडी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू बायोलॉजी. फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सुश्रुता है, फिर चरक, सर जगदीश चंद्र बोस, रोनाल्ड रॉस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बीरबल साहनी, वेंकटरमन रामाकृष्णन, सलीम अली, एम.एस. स्वामीनाथन एंड डॉक्टर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी. इन लोगों के बिना शायद दुनिया के सामने इंडिया अपना पहचान नहीं बना पाते थे. इसलिए इन लोगों के बारे में जानना हम लोगों को बहुत ही ज़रूरी है. चलिए इन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं. पहले हम लोग बताएंगे एंशियंट दो इंडियन बायोलॉजिस्ट सुश्रुता एंड चरक के बारे में. सुश्रुता को कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी, जिन्होंने दुनिया को दिखाए थे कि सर्जरी ऑपरेशन कैसे किया जाता है और बहुत सारे ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट इन्होंने आविष्कार किए थे. चरक एक बहुत ही अच्छा इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर थे जो दुनिया को बताए थे कि कोई डिजीज़ कैसे पहचाना जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, सिम्टम्स कैसे पहचाना जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, जो कि उन्होंने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में बताए थे. उन लोगों के साथ और भी कुछ साइंटिस्ट का नाम या बायोलॉजिस्ट का नाम हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि पतंजलि, जिसको आयुर्वेद का फादर कहा जाता है. मौर्य डायनेस्टी या गुप्ता डायनेस्टी, ये जो टाइम था, ये समय में इंडिया का साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इंडिया का गोल्डन एरा कहा जाता है. उसके बाद ऑब्वियसली हम लोग को नाम लेना पड़ेगा डॉक्टर या सर जगदीश चंद्र बोस का, जो कि इंडियन बायोलॉजी का एक पायनियर साइंटिस्ट है, जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रूव किए थे कि प्लांट्स आर नॉट नॉन लिविंग, प्लांट्स आर लिविंग बीइंग. उनका बनाया हुआ जो इंस्ट्रूमेंट क्रेस्कोग्राफ जो बताया था कि प्लांट्स भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं. उनको कहा जाता है कि उनके बारे में वो रेडियो भी पहली बार वही बनाए थे, लेकिन लक के कारण जो नोबेल प्राइज़ जो है वो गुलियम मार्कोनी को मिल गया था, क्योंकि जगदीश बोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके पहले नहीं कर पाए थे. उसके बाद डॉक्टर रोनाल्ड रॉस, जो एक ब्रिटिश ओरिजिन इंडियन डॉक्टर थे, जिन्होंने आइडेंटिफाई किए थे मलेरिया डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोस. उसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में, जो एक इंडियन नोबेल लॉरिएट है, जिनको 1969 में जेनेटिक कोड के ऊपर रिसर्च के लिए नोबेल दिया गया था. उसके बाद है फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी, बीरबल साहनी. उसके बाद है और एक गिने चुने वो सारे इंडियन नोबेल लॉरिएट्स में एक वेंकटरमन रामाकृष्णन, जिनको 2009 में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल रिसर्च ऑन आरएनए के ऊपर नोबेल दिया गया था. उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंडियन साइंटिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, द फादर ऑफ इंडियन बर्ड स्टडी, जिसको बर्डमैन भी कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली. उसके बाद है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, एम.एस. स्वामीनाथन,
जिन्होंने बहुत सारे व्हीट और पैडी का, धान और गेहूं का हाई यील्ड वैरायटी इन्होंने डेवलप किए थे। और अंत में हम लोग देखेंगे डॉक्टर UN या उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, जो भी एक पायनियर इंडियन डॉक्टर थे, जिनको नोबेल मिलते मिलते नहीं मिला था 1929 में। हाँ, उन सब कहते कि इंडियंस सोचे थे कि उनको ही नोबेल मिलेगा, लेकिन उनके बदले में उस साल नोबेल मिल गया था हॉपकिंस को विटामिन आविष्कार करने के लिए। फिर भी हम लोग उनका जो इम्पोर्टेंस को नहीं भुला सकते हैं। UN ब्रह्मचारी काला आजार का एंटीडोट यूरियास्टिबामिन आविष्कार किए थे। अब हम लोग देखेंगे स्कोप्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी हम लोग को क्यों पढ़ना ज़रूरी है। पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, टू प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट रिच फूड मेंटेनिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी। दुनिया का जो आबादी है, पॉपुलेशन जो है, वो दिन के दिन बढ़ते जा रहा है, और एग्रीकल्चरल लैंड जो है दिन के दिन घटते जा रहा है, और पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन लेवल भी ड्रास्टिकली बढ़ते जा रहा है। तो ये सारी चीज़ के साथ कोप अप करके जो इंसान को, ह्यूमन जो स्पीसीज़ को अच्छा खाना परोसना चाहिए, क्योंकि फूड के ऊपर लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। तो अगर बायोलॉजी ठीक से पढ़ाई करेंगे, बायोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे, तभी न्यूट्रिएंट रिच हाई यील्डिंग वैरायटीज़ कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में जानकारी हम लोगों को मिल सकेगा। प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक, ड्रेसेस, वेयरिंग्स जो पहनते हैं वो फाइबर से बना होता है। तो फाइबर का क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं बायोलॉजी पढ़ के। टू चेक पॉल्यूशन, दिन के दिन जैसे जिस मात्रा में पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, हम लोगों को सबको पता है कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कैसे एयर पॉल्यूटेड हो रहा है, कैसे सॉइल पॉल्यूटेड हो रहा है। तो पॉल्यूशन को अगर रोकना है, पॉल्यूशन को हम लोग लिटरली रोक नहीं सकते, लेकिन जो पॉल्यूटेड हो जाने के बाद उसको फिर से नेचुरल कंडीशन में कैसे वापस लाना है, वो जानने के लिए हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन्स, ऑब्वियसली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि दिन के दिन डिजीज़, सिंड्रोम्स बढ़ते जा रहा है, और डिजीज़ के अगेंस्ट को वाप करने के लिए, डिजीज़ को क्योर करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन्स का हम लोग को ज़रूरत होता है। जितना दिन जाएगा और भी ज़्यादा कॉस्टलेस मेडिसिन हम लोगों को बनाना पड़ेगा। कॉम्बैट अगेंस्ट डिजीजेज, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ, कंजर्वेशन एक्टिविटीज़, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, स्पेस रिसर्च। स्पेस में भी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे लाइफ है, एलियन लाइफ का पॉसिबिलिटीज़ देखा गया है। तो इसके लिए बायोलॉजी के बारे में स्पेस बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। एस्ट्रोबायोलॉजी फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, ऑब्वियसली जो भी नया चीज़ इन्वेंट होता है जिसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, तो हम लोगों को मज़ा देता है। एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल पर्पस एंड इकोनॉमिक बेनिफिट।